अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है साकियो? ठीक है। आज ये मेरी पहली स्ट्रीम है, मतलब आवाज़ के साथ। मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, इसलिए मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे एडवांस में ही माफ़ कर दें। सो आज हम साइंस आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि शहरी तक आज हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने चैट जीपीटी ओपन है, इसके ज़रिए मैं अपनी रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। जैसे भी हो, तो इसका मकसद एक ये भी है कि जो हमारे जैसे नौजवान और बच्चे हैं उनको एक मोटिवेशन देना कि वो किस तरह एआई को इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया में बच्चे बहुत सारी चीज़ें गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा भी है, लेकिन अगर कोई चाहे, कोई हमारे जैसा पागल हो तो वो इससे बड़ा कुछ हासिल कर सकता है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये मैं अपनी एक थ्योरी के लिए डाटा इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, और उसी से फिर उसको आगे मज़ीद डिबेट करके डाटे को रिफाइन करके ऑफ द टॉपिक की चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मदद मिलती है इससे। अगला, तो मेरी डिबेट के दरमियान ही मेरी थ्योरी के मुताबिक चैट जीपीटी ने मुझे रेकमेंड किया कि ऐसे तीन चार थिंकर्स हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है जो आउट ऑफ द बॉक्स यूनिक है, वो आपके साथ रिलेट करता है। तो मैंने कहा ठीक है, हम उनकी पूरी लाइफ स्टडी, उनका लाइफ वर्क ही पढ़ लेते हैं। कंप्लीटनेस पे थ्योरी थी, वो दोनों समझी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलन ट्यूरिंग, जो कि कंप्यूटेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। यही ट्यूरिंग टेस्ट, जिन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट की बुनियाद रखी। तीसरे हमारे रिचर्ड फेमैन, क्वांटम मैकेनिक्स एंड थिंकिंग लाइक ए फिजिस्ट। चौथे हैं हमें हमारे रे कुर्जवेल, सिंगुलैरिटी एंड फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस, जो अभी भी हयात हैं। ठीक है। हाय। Okay, now summarize the whole life work of Turing in different points. Alan Turing, 1912 to 1954, was a 1912 to 1954, British mathematician, father of modern computing and artificial intelligence. Great. क्रिप्टोग्राफी, ये क्रिप्टोग्राफी को समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमारी अभी ये डिजिटल क्रिप्टोग्राफी है ना, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के बाद इस डिजिटल क्रिप्टोग्राफी को ख़तरा है। क्यों? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर किसी भी किस्म की सिक्योरिटी या इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है बड़ी आसानी के साथ। और लाइटर नोट, क्रिप्टोग्राफी को अगर समझना है तो हमारा जो मौजूदा सेटअप है सारा सियासी हुकूमती, उसे आप ऐसे समझिए कि ये क्रिप्टोग्राफी है। कोई नया नज़रिया, कोई नई सोच, जैसे इमरान खान, ये क्वांटम कंप्यूटर है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो इस सारी क्रिप्टोग्राफी यानी इस सारे सेटअप या पुराने सिस्टम के लिए ख़तरा है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई और मुकम्मल तौर पर नाफज हो गई, तो
पिछलों के साथ क्या होगा, बस अगर आसान अल्फाज में समझें, पिछले सारे गए। इनकी की इनकी की कंट्रीब्यूशंस है लाइफ वर्क है, ट्यूरिंग मशीन 1936। ठीक है, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट। हर चीज़ थ्योरी से स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारी साकी लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी थ्योरी से स्टार्ट हुई है। आज हमने उसकी थ्योरी से स्टार्ट किया है, तो यकीनन कभी ना कभी तो उसको हम हकीकत में बदल ही लेंगे। इम्पैक्ट, दिस लेयर द ग्राउंडवर्क ऑफ church Turing thesis, which possesses that anything computable by human using a procedure is also computable by human. ठीक है। ठीक है, इन्होंने 1936 में ट्यूरिंग मशीन की बुनियाद रखी, या एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है अपना थ्योरी पेश की। उसमें ये कहते हैं कि एनीथिंग, जो भी इंसान कंप्यूट कर सकता है किसी भी चीज़ को, उसे ट्यूरिंग मशीन भी कंप्यूट कर सकती है। यार मुझे तो ये समझ आ रही है। अगर कोई चीज़ कम्प्लीटली ना भी समझाए तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर पहली दफ़ा हम चीज़ को देखते हैं तो हमें थोड़ी अजीब लगती है, मुश्किल लगती है, लेकिन पहली दफ़ा आप सिर्फ उसको देख कर और जितना समझ आए ये समझ कर ही छोड़ दें तो काफ़ी होता है। दूसरी दफ़ा आएंगे तो थोड़ा और समझ आएगा, तीसरी दफ़ा कभी रिपीट होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिल के बेहतर होती चल जाएगी। यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं हर तरह का जो भी नॉलेज हो उसको हासिल करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे लिए नहीं होती हैं, क्योंकि मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ। मेरे पास कोई डिग्रियों के ढेर तो नहीं है, ना ही मैं पीएचडी हूँ। कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ साथ जब कई चीज़ें साथ मिलती हैं, ठीक है, जैसा एक आर्टिकल पढ़ा है एआई के बारे में, जब 10 आर्टिकल पढ़े हैं तो यकीन कितनी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। जब 100 पढ़ूंगा तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अब उनका बैकग्राउंड के लिए मैं जब मज़ीद रिसर्च करता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, तो मज़ीद बेहतरी आती चली जाती है। इसलिए ये परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि आपको क्या हासिल हो रहा है। अगर आप कुछ ना कुछ बेहतर हो रहे हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं। ये हमारे जो बच्चे कुछ इल्म हासिल करना चाहते हैं ख़ास तौर पे, उनका ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो दूसरे जो खुद कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही उनसे डर रहे होते हैं, ये घबरा रहे होते हैं, ये वो क्या कहेगा, मुझे चीज़ समझ नहीं आई, मैं सवाल कैसे पूछूं। नहीं, ये देखें ना, एआई से आप जितना सवाल पूछेंगे उतना ही आपको बेहतर आएगा। अब जो बच्चा सवाल पूछता ही नहीं है, चाहे वो डर के, सहम के, या खुद को 30 मार्क समझ के, उसे कुछ भी नहीं एआई से मिलने वाला। एआई से सिर्फ वही चीज़ें हासिल करेगा, कुछ पाएगा जिसे सवाल पूछना आता होगा। उम्मीद है कि हमारे अदारे सवाल पूछने पर भी अब कुछ फोकस करेंगे, बजाय इसके खामोशी से बैठ जाओ, कोई सवाल नहीं पूछना। दिस लेटर द कन्वर्सेशन ड्यूरिंग थीसिस, ठीक है, ब्रेकिंग द एनिग्मा कोड 1939 और 1945। ठीक है, बाकी एनिग्मा कोड को ब्रेक करने की
ब्रेक करने में मदद की। अब ये कमाल का पॉइंट है, मैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ता रहता हूँ और हिस्ट्री के बारे में। देखें, हम एक साइंस का काम करते करते हमें एक हिस्ट्री का भी कितना अच्छा क्लू मिल गया कि ट्यूरिंग टेस्ट, जो एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग ही है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन कोड्स को ब्रेक करने में मदद दी थी। और ये शायद कोड्स ही हों, और यकीनन ये इंटेलिजेंस ही होती है जो किसी भी जंग को जीतने में मदद देती है। कितना क्रिटिकल रोल उनका था कई दूसरी चीज़ों के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में। नाउ summarize his whole research work, like his research papers, in points. Alan Turing's research work spans across various fields, including mathematics, logic, सही है। दो दो यही खोलनी है। ये है क्या? एंड शीडंग्स प्रॉब्लम। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ठीक है, एन शाइडोंग्स प्रॉब्लम। क्या बात है, ये है एन शाइडोंग्स प्रॉब्लम। ठीक है, और ये है क्या? is a concept from mathematics and logic that essentially asks, is there an algorithm that can determine whether any given mathematical statement is true or false? ठीक है, that automation means a decision problem in German. Decision problem, proving that there are some mathematical questions that cannot be solved by any algorithm. अब देखिए, जब आप असल बुनियाद पढ़ते हैं सारी साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, और साइंटिफिक एवोल्यूशन हर चीज़ की बुनियाद में मैथमेटिक्स आती है। और बदकिस्मती से हमारा जो सारा सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम, उसमें मैथमेटिक्स को एक ऐसी चीज़ बनाया हुआ है कि बस उसका कॉमन सेंस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। जबकि सोचने वाली बात है, अगर अगर एक चीज़ इस दौर में बच्चे को इतनी मुश्किल लग रही है, और इतना कुछ होने के बावजूद कोई किसी एक सिंपल सी मैथमेटिकल चीज़ को समझ नहीं पा रहा, तो 200 250 100 साल पहले कैसे, बगैर इतनी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ माइंड एक्सपेरिमेंट्स और अपनी इमेजिनेशंस के लिए, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करता हूँ कि इमेजिनेशन कितनी ज़रूरी है कि वो इतनी कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को समझ लेते थे। इसके दो ही ऑप्शन है, या तो पहले इंसान ज़्यादा अक्लमंद और इंटेलिजेंट होते थे और अब नहीं है, जो कि बात नहीं, गलत है, क्योंकि अब भी इतनी ज़्यादा काम हो रहे हैं, या फिर उन्होंने मैथमेटिक्स को किसी और तरीके से समझा और हम किसी और तरीके से समझ रहे हैं। यकीनन हमारा तरीका गलत है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा। तो हर चीज़ को अप्लाइड तरीके से समझाना चाहिए। सिस्टम्स ऑफ लॉजिक बेस्ड और ऑर्डिनल्स एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन लॉजिक एंड सेट थ्योरी। अब ये लॉजिक और सेट थ्योरी, ये इसके ऊपर सारा जो डिजिटल है, जो कंप्यूटिंग है, वो खड़ी है। और बच्चे, मैं चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा इसमें उसने ग्रेजुएशन की हो
हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और वो एक आम बच्चे को आम जुबान में समझाए कि लॉजिक और सेट थ्योरी की क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि 90% नहीं समझा पाएंगे। जो चीज़ इंसान को खुद समझ आए और वो आसान सादा अल्फाज में ही दूसरे को समझा सके, तो फिर इसका मतलब उसे मुकम्मल समझ आ गई। ठीक है। हमारे बच्चे बस डेफिनेशन को रट्टे लगाए जा रहे होते हैं, उन्हें कुछ समझ आ नहीं रही होती। वो इंग्लिश की जैसे उन कुरान पाक की हाफिज पूरी पूरे कुरान पाक हिफज किया होता है, उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। 90% जो हुफाज होते हैं, इसी तरह हमारा हाल है। इंग्लिश की पूरी पूरी किताबें रटी हुई हैं, एक तरफ से शुरू होते हैं, लिखी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं। इससे बेहतर है एक अनपढ़ इंसान कोई एक थ्योरी ही समझ ले, उस पर काम कर ले अपनी जुबान में, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, सराइकी, उसको मुकम्मल तौर पर समझ के किसी दूसरे को समझाने के काबिल हो जाए। वो उससे बेहतर है जिसने पीएचडी की हुई है और बस अंग्रेजी के पूरी पूरी डिक्शनरी रटी हुई है और कोई पता नहीं वो क्या बोल रहा है। क्या बात है, ये देखें अब बायोलॉजिकल काम। अब हमारा जो एक जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का टीचर है, वो बायो का केमिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं, केमिस्ट्री का जो है फिजिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह अलग अलग किए हुए हैं, जब पूरा नॉलेज पूरी यूनिवर्स ही अपनी केमिस्ट्री में एज ए होल एक है। मतलब यूनिवर्स में तो नहीं अलग अलग सब कुछ, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हर चीज़ ये सिर्फ यूनिवर्स को समझने के टूल हैं। तो इन्हें ये टूल ही रहना देना चाहिए। इन्हें ऐसी वही और आसमानी किताबें ना बनाएं कि जो ऊपर से अलग अलग आई थी तो ये अलग ही रहनी। अब ये देखें, ये लोग पागल हैं कि बायोलॉजिकल पैटर्न्स को समझने के लिए क्या चीज़ यूज़ हो रही है, मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है। क्या हमारे किसी अदारे में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बायो को समझाने के लिए मैथमेटिक्स यूज़ होती है? इवन के मैथमेटिक्स को समझाने के लिए बायो यूज़ होती है? मैथ एक यूनिवर्स को हमने डिकोड करने के लिए सबसे आसान तरीका बनाया है। हर चीज़ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बयान किया जा सकता है। ठीक है। जैसे ये हम बड़ी बड़ी थ्योरीज देखते हैं मुश्किल से मुश्किल, वो जो इतनी मुश्किल थ्योरी सामने लिखी होती है और वो सारे ऐसे परेशान होकर देख रहे होते हैं पता नहीं क्या चीज़ है। असल में उसमें जो हर सिंबल के इक्वल कोई ना कोई उन्होंने चीज़ रखी होती है, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स, कोई ना कोई फैक्टर्स रखे होते हैं, और उसको वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं। कोई इंसान अपनी थ्योरी बना सकता है, कोई अपनी आसान उर्दू की बात को, अपने उर्दू के मुहावरे को, अपने कॉल को, वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी लिख सकता है। इस तरह बच्चों को समझाया जाना चाहिए। चलिए, इंशाल्लाह हम अपनी साकी लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा एजुकेशनल मॉडल देंगे जो कि अभी तक पूरी दुनिया में नहीं आया। ना सिर्फ एग्जिस्टिंग तरीके से काम करेगा बल्कि एडवांस, ऐसे एडवांस तरीके जो अभी तक दुनिया में भी मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट नहीं हुए। ठीक है। और 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट की बुनियाद रखी, द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी टू क्रिप्टोग्राफी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू कोड ब्रेकिंग, ग्रेट, contributed to break Enigma code. Now explain
Explain me in detail his first work of 1936. It should cover every point. The Weber was foundation of mathematics, logic, theoretical computer science, and Turing machine formalized the concept of computation. And Shidong's problem, the same problem paper, providing that some problems cannot be solved algorithmically. ठीक है ये भी वही इनकम्प्लीटनेस थ्योरी के साथ रिलेट कर रही है that some problems cannot be solved algorithmically. Background. Is there a mechanical process that can determine whether any given mathematical statement is true or false? ठीक है क्या कोई एलोग्रिथमिक प्रोसेस है जो ये बता सके कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है गोल क्या था मैथमेटिशियंस वांटेड a general algorithm that could take any logical statement and determine its true within a formal system. Yeah, very good. मैं भी ऊपर यही बात कर रहा था कि कुर्त गोदेल उसके काम के साथ ये रिलेट करता है और कमाल है और नीचे ये उसने बता भी दिया है कि गोदेल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरी के साथ ये रिलेट करता है दैट सम मैथमेटिकल ट्रूथ्स कैन नॉट बी प्रूव्ड विद इन अ फॉर्मल सिस्टम ठीक है arithmetization of logic. Turing provide a computation-based proof that no such algorithm exists. Hmm. Turing approached the concept of computable numbers. Find mechanical procedure. Computable numbers. A number is computable if there exists a step-by-step algorithm that can generate its decimal expansion.
Foundation of modern computers. Hypothetical machine that follows precise rules to manipulate symbols on an infinite tape. Why is it important? Formalize what it means for a function to be algorithmically computable. ठीक है, it provides a mathematical model of computation that could simulate any algorithm process. Oh, modern computers can be thought of a physical realization of Turing machine. ठीक है, यानी जो ट्यूरिंग ने उस वक्त 1950s के आसपास जो हाइपोथेटिकल ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था, आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो उसकी एक फिजिकल शेप समझ लें। कितना टाइम लगता है साइंटिफिक फैक्ट्स को फिजिकल शेप लेने में। ओके, the Anti-Shidon's problem. Why some problems are unsolved? Turing uses a machine to answer Hilbert's Anti-Shidon's problem. अच्छा, ये एक बंदे का नाम है। There is no general algorithm that can determine the truth of all mathematical statements. ठीक है, लेकिन ये थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीटनेस या ये ट्यूरिंग टेस्ट, मेरे ख्याल है ये चीज़ें AGI या ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और उसका कम्बिनेशन क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ, उसके बाद शायद ये थ्योरीज बदल जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर एक डिफाइंड एक कन्फाइंड सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है, शायद आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI और अगर उसके पास क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर हो, यानी उसकी कंप्यूटिंग उस लेवल की हो, शायद वो हर प्रॉब्लम हर उस एक कन्फाइंड सिस्टम के अंदर क्वेश्चन का जवाब दे सके। पॉसिबल है। अगर हमने ये अचीव किया तो फिर ही शायद हम स्पेस टाइम फैब्रिक को सोल्व करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर स्पेस टाइम फैब्रिक को सोल्व करना है, ये जहाँ से मेरी डिबेट शुरू हुई थी और मेरी सर्च इसके बारे में मैंने शुरू किया आगे, अगर स्पेस टाइम फैब्रिक को हमने क्रैक करना है तो उससे पहले जो यूनिवर्स हमारी है उसके अंदर जो भी कुछ है, हर प्रॉब्लम का सलूशन पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब अगर यूनिवर्स एक बॉक्स है तो उस बॉक्स के बारे में 100% हर चीज़ का जब हमें पता चलेगा, मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप होगा स्पेस एंड टाइम, उसको हम क्रैक करेंगे। तो उसके लिए ये है जो थ्योरी ऑफ इनकम्प्लीटनेस और जो ये एंड शिडोन्स प्रॉब्लम है, इसको यकीनन गलत होना पड़ेगा।
some mathematical problems are inherently unsolved। ये तो किसी हद तक अब भी सच है कि अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जो इनहेरेंटली, जो बुनियाद से ही अनसॉल्व्ड हमें अभी तक लगती हैं। लेकिन ये चीज़ अब किसी हद तक गलत साबित हो गई है कि देयर आर लिमिट्स टू कंप्यूटेशन, मीनिंग नॉट एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड। आपने उस दौर में वो जिन चीज़ों को सोच रहे थे कि वो ऑटोमेट नहीं हो सकती या कंप्यूट नहीं हो सकती, उनमें से कई चीज़ें अब हम कंप्यूट किए बैठे हैं। और जो इसकी लिमिट्स रह गई हैं वो शायद क्वांटम कंप्यूटर्स आके वो भी ख़त्म कर दें। अभी हम जो लिमिट सोच रहे हैं, हाँ एक इक्वेशन है या एक प्रॉब्लम है, अगर हमारे क्लासिकल कंप्यूटर उसको अरबों साल तक सोल्व करने में लगे रहें वो नहीं होगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स तो उन अरबों सालों को, उन अरबों सालों की जो कंप्यूटेशन है उसको चंद सेकंड्स या चंद घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं, जो अभी तक हमने बनाए हैं। तो यकीनन ये सब कुछ लिमिट्स को हमें दोबारा रीडिफाइन करना पड़ेगा, या तो हमें अपनी लिमिट्स बढ़ानी पड़ेंगी, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। जितना इंसान ने इमेजिन करना था कर चुका, अब उनकी सोल्यूशन की तरफ ही हम जाएंगे।
चलो, एक तो लाइव आने की वजह से मेरे पढ़ने की रफ्तार बहुत स्लो हो गया। चलो, चंद एक दिनों में ये आदत बन जाएगी। इसका मकसद कोई व्यूज़ हासिल करना या क्या किसी को दिखाना नहीं, बल्कि मैं इसके बस ऐसे ही एक जर्नल के तौर पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साइकिल लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की बुनियाद रख रहा हूँ। मतलब अभी मेरे मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यकीनन बच्चे सवाल तो उठाएंगे ना कि भाई आपको क्या आता है। तो बच्चों का सवाल जायज़ भी होगा। ये एक तरह से उनके लिए एक मेरी डिग्री है कि वो देख सके कि मैं कैसे कैसे सिर्फ एक चीज़ पर नहीं बल्कि हर फील्ड पर, क्योंकि साकी लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हर फील्ड ही तकरीबन आता है। बल्कि दुनिया में पहली दफ़ा सारे इंसानी इलम को एक जगह इकट्ठा किया है। ना सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि उसको क्लासीफाई करके उसको एक नए सिरे से नए तरीके से उसको देखने का बुनियाद रखी है। चलें, उनके पेपर का इम्पैक्ट क्या हुआ था। कंप्यूटर साइंस ट्यूरिंग मशीन है become the foundation of modern theory of computation. Universal Turing Machine. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम को इन्फ्लुएंस किया मैथमेटिक्स एंड लॉजिक, strengthened Gödel's incomplete observation. Algorithmic methods have fundamental limits. Why this paper was revolutionary? मॉडर्न कंप्यूटर की एक तरह से बुनियाद थी वो। Now explain in detail his Sankey work. Computability and lambda lambda है ये lambda। अलोन्सो चर्च कैलकुलस। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है।
सही। ठीक है, यानी इस पेपर में तो एक और साइंटिस्ट ने लैम्डा कैलकुलस के ज़रिए ट्यूरिंग मशीन के उसके कंसेप्ट से रिलेटेड ही काम किया था, उसे मिलता जुलता लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। तो इसमें उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की है कि ये मेरा ट्यूरिंग मशीन और लैम्डा कैलकुलस दोनों इक्विवेलेंस है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पेपर यूनिफाइड कंपैटिबल। वो क्या इससे पहले कंप्यूटेशन को फॉर्मल मैथमेटिकल फील्ड में ही नहीं गिनते थे? खैर, इस पेपर में तो सिर्फ उन्होंने यही साबित किया है कि लैम्डा कैलकुलस और ट्यूरिंग मशीन्स ये एक ही आइडिया, और साथ ये भी बताने की कोशिश की है कि देखें कि लैम्डा कैलकुलस एक और अप्रोच के ज़रिए उन्होंने सॉल्व किया है अपने सारे काम को, लेकिन फिर भी जवाब वही है कि कुछ मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होती। थर्ड and major work on computable numbers with an application to Anshidong's problem correction। देखिए, जैसे जैसे आप किसी साइंटिस्ट की लाइफ के आखिरी हिस्से की तरफ जाते हैं तो फिर आपको असल उसकी ज़िंदगी का निचोड़ मिलता है। जैसे हमारी तरह 20-21 साल की उम्र में आपको यही मिलेगा जो आप अब सुन रहे हैं, लेकिन 60-70-50-60-70-80 साल की उम्र में असल काम जो सारी ज़िंदगी का निचोड़ होता है किसी भी साइंसदान का, इसलिए जो आखिरी काम है साइंटिस्ट के किसी भी के, उनको गौर से समझना बड़ा ज़रूरी होता है। हमेशा किसी भी इंसान का पहला काम, उसमें कमियां तो होती ही हैं। In 1936 paper had some minor inconsistencies in definitions and notation।
redefine this definition to make it more rigorous. कोई भी साइंटिफिक थ्योरी की खूबसूरती ही ये है कि उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। यही हमारी साकी लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में तमाम नॉलेज की बुनियाद है। हर चीज़, हर नॉलेज, हर बात वो ओपन सोर्स है। उसको कोई भी लॉजिक और एक साइंटिफिक तरीके के साथ बेहतर कर सकता है, इसको चैलेंज कर सकता है। जो मेरी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं वो भी उनको मैं एज ए फर्स्ट आर्ग्यूम प्रपोजल के तौर पर लेता हूँ। इंशाल्लाह जब बहुत सारे साकीज इकट्ठे होंगे इंटेलिजेंट माइंड, तो मिलकर हम उनको बेहतर से बेहतर करेंगे। What are ordinals? Ordinal logic.
Hmm. Oracle machines. A hypothetical machine that can answer uncomputable problems. सही. सही है. देखें वो उस वक्त ही ये मान चुके थे कि इट एक्सपेंडेड मैथमेटिकल लॉजिक बियॉन्ड गोडेल्स लिमिटेशन. अब एक सिस्टम के अंदर जिन लॉजिकल प्रॉब्लम्स को वो अनसॉल्वेबल कह रहे थे, ट्यूरिंग ने खुद ही उन्हें इम्प्रूव कर दिया, यानी उनमें से कुछ को सोल्व किया जा सकता है. या how far mathematical systems can be extended.
This was a technical refinement oriented method, strengthening the foundation of computability theory. चीज़ों को मज़ीद बेहतर से बेहतर समझेंगे जब हम एक अपना सिस्टम बनाएंगे. Alan Turing thesis. Systems of logic based on ordinals. PhD thesis. वाह, कैसे कमाल इंसान था. यही यही खूबसूरती होती है असल साइंटिस्ट की. अपनी ही चीज़ को वो फिर नेक्स्ट खुद ही उसे बेहतर करते हुए उसे रॉन्ग साबित करने की भी कोशिश करते हैं. कम्प्लीटली रॉन्ग तो नहीं, यानी वो एक कहने के वो एक फैक्ट पहले रिफाइन करते हैं, फिर उस पर खड़े होकर नए फैक्ट तलाश करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ट्यूरिंग अपनी जो इनकम्प्लीट गुडेल की इनकम्प्लीटनेस की थ्योरम्स के साथ मैच करती है कि कुछ प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती एक सिस्टम के अंदर. मैथमेटिकल रीजनिंग को एक्सटेंड करने के लिए जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से कुछ को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे. आखिरी दिनों में इंट्रोड्यूस द concept of ordinal logic to create a system that could overcome some of the limits. सारी तो नहीं, लेकिन कुछ को सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे. मैकेनिकल इंटेलिजेंस, अर्ली एआई. Machines learning and modifying their behavior based on rules. This was one of the earliest conceptual foundations of AI. Machine learning. Intelligent machine.
Cryptanalysis on World War II contribution 1939 to 45. The Bombay, which dramatically sped up the decryption process. Hmm, 2 to 4 years. Data and instructions. Proposed electronic computer.
एक बात इम्पोर्टेंट है कि मैं ये जो सारा काम पढ़ता हूँ इसमें मतलब इसको खुद कंटिन्यू करने के लिए नहीं पढ़ता ज़्यादातर काम, बल्कि इस तरह पढ़ता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए, और इतना को पता होना चाहिए कि अगर कोई इसमें फुल एक्सपर्ट है तो मैं उससे कोई रिलेटेड असल कोर इन्फॉर्मेशन ले सकूँ, उससे कोई सवाल पूछ सकूँ, यानी मुझे कुछ पता होगा तो सवाल पूछ सकूँगा। यकीनन इसको असल लेवल पर तो हमारे वो बच्चे करेंगे जो सिर्फ एक एक फील्ड पॉइंट में माहिर होंगे, जो एक एक चीज़ में माहिर होंगे, क्योंकि एक ही वक्त में इतनी ज़्यादा चीज़ों में 100% महारत तो मुमकिन नहीं। लेकिन अगर कोई इतने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट को चलाना चाहता है या उसका लीडर बनना चाहता है, आगे आना चाहता है, तो उसे हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन, कंप्यूटर का पहला नाम, अर्ली नाम ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन। न्यूरल नेटवर्क्स, जेनेटिक एल्गोरिथम्स, ट्रायल एंड एरर जो अभी कर रही हैं मशीन, ट्यूरिंग टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिज लाइफ, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। अगर सिर्फ टेक्स्ट की बात करें तो आप टेक्स्ट क्या, आप तो स्पीच में भी इंसान ये नहीं पता लगा सकता कि उसके साथ एआई बात कर रही है या इंसान। तो अकॉर्डिंग टू ट्यूरिंग टेस्ट मेरे ख्याल में मशीन इंटेलिजेंट हो चुकी है। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस अभी कह सकते हैं कि नहीं आई, शायद आई हो, डेवलप हुई हो, लेकिन अभी उन्होंने रिलीज ना की हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्क मॉर्फोजेनेसिस। क्या हुआ, एआई पर काम करने के बाद बायोलॉजी पर सीधा ही बायो पर। फ्रॉम सिंपल केमिकल एंड मैथमेटिकल रूल्स, बेहतरीन। क्वांटिटेटिव बायोलॉजिकल थ्योरी, chemical substances interact and diffuse through tissues leading to patterns.
Small chemical differences. ठीक है, 1954 unfinished work. Next person. So ये था ट्यूरिंग, एलन ट्यूरिंग का काम. हमने सारा स्टडी किया उनको, जिसमें completeness, जिसमें इनकम्प्लीटनेस थ्योरी को एनफोर्स किया, ट्यूरिंग मशीन का आइडिया दिया, वर्ल्ड वॉर 2 में कोड्स ब्रेक किए, फिर ट्यूरिंग टेस्ट का आइडिया पेश किया, इंटेलिजेंट मशीन्स के बारे में बताया, और आखिर में बायोलॉजिकल पैटर्न्स को
स्टडी करने के लिए मैथमेटिकल बायोलॉजी की तरफ बढ़े। हमारी लिस्ट पर अगला बंदा है रिचर्ड फेमैन। रिचर्ड फेमैन 1918 to 19 theoretical physicist, quantum mechanics, quantum electrodynamics, वो superfluidity and nanotechnology. Challenger disaster investigation, Feynman diagrams. ये बंदा इंटरेस्टिंग है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पहला काम, QED, Feynman diagram 40 to 50. Main idea: unified quantum mechanics and electromagnetism to explain how light and matter interact. Path integral formation solved issues in renormalization, making QED mathematical consistent. Won Nobel Prize for his Schwinger and Tomonaga. Inside of a single trajectory, a particle explores all possible paths between 2 points. Sure. Integral formation. Schrodinger's wave mechanics. Propose the idea of quantum computers where quantum qubits can be in multiple states at once. Macroscopic fluid behavior. Low temperature physics. Bose-Einstein condensates सुपरकंडक्टिविटी के बारे में क्या क्या काम किए हैं बंदे ने। वीक निकल फोर्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। क्या बात। Imagined machines that could manipulate atoms and molecules. Challenger disaster investigation. Expose the O-ring failure in Challenger space shuttle disaster. अच्छा, करंट अफेयर्स पे भी काम किया। क्या बात। नासा को बात मनवाई, बड़ी बात। ऐसे अदारों, जिद्दी अदारों को अपनी बात मनवाना।
ठीक है, why feminine work is important. Unified quantum mechanics and electromagnetism developed QED, the most precise theory in physics. Feynman diagrams, quantum computing, nanotechnology, and molecular machines. Physics with lectures or practical problem solving to real world engineering issues like Challenger. जी भैया स्टार्ट हो जाओ. ठीक है, पहला काम path integral formulation of quantum mechanics. सही. क्लासिकल मैकेनिक्स में एक पाथ होता है ए टू बी के दरमियान, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए पार्टिकल तमाम पॉसिबल पार्ट्स को एक्सप्लोर करता है और उन तमाम पॉसिबल पार्ट्स उन सब को सॉल्यूशन में रखना पड़ता है. क्लासिकल मैकेनिक्स इमर्ज फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर से, सॉरी, वैसे देखने से ये मिलता है लगता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स पहले आए तो क्वांटम मैकेनिक्स बाद में, यानी उनसे निकले क्लासिकल से, लेकिन नहीं. क्वांटम मैकेनिक्स में से क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स तमाम पॉसिबल पाथ्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स उनमें से एक पॉसिबल पाथ या एक जो हमारे नॉन पाथ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं.
आवाज़ भी बंदोबस्त कर लिया आज चेक कर वो हेडसेट मेरे हेडफोन से निकली कुछ लेकिन आपका मकसद वो था ना मैं तो मेरा जो जर्नल रखना चाहूँ तो मैं इतने बड़े साइंटिफिक कानून करना जब कानून बच्चा ने मुझे वहाँ भी रिसर्च करना अगर मैं साथ में लेकर गया ना बाहर तो मेरा अपना रोज़ का शेड्यूल बनाना मैं लाइक करना ताकि एक रिकॉर्ड हो जाए कोई भी यार अगर आए ना मुझे अभी कहीं नहीं पता है या प्रूफ ही पड़े पता नहीं तो फिर मैं ना गलत है हमारे बच्चे को जमाना में यकीन हो गई थी यार ऐसी कोई बड़े गलत सामने हमारे मेरी आदत की बात है हम तो बहुत महीना हमारी बच्चे समझे शादी हो गई हम तो ईद का इंतजार कर रहे हैं ना हर कहीं सारी कोशिश ये कर मम्मी लगे हमें ईद से पहले हमारी कोशिश है कि 2025 ऑर्डर भी बना मेडिकल Okay, introduce a new category of quantum probabilities, Feynman's formulation to especially using double slit closely article of the power.
की प्रोसेस सन एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हमारे काम की चीज़, मेरे काम की चीज़, वीक इंटरेक्शन, पावर, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स। क्या जुमला। देयर इज plenty of room at the bottom, यानी नीचे देखो। We should build machines at the atomic level. Tiny machines that can manipulate DNA, mm, leading to new materials and medicines. Very good. Proposed the first ever idea of quantum computers, launched in nanotechnology decades before it became real, laid the foundation for modern computing beyond classical limits. सही।
Hmm. Why did he write this? Caltech asked Feynman to redesign physics education because students were just memorizing formulas instead of understanding them. So he gave a series of revolutionary lectures to freshmen and sophomores, later published as the Feynman Lectures on Physics, a three-volume textbook still considered one of the best resources of learning physics. जरूर पढ़नी चाहिए. इनका ज़रा मैं ऐड कर लेता हूँ अपनी बुक्स में. ये ज़रूर तसल्ली से और डिटेल से पढ़नी चाहिए. Feynman lectures. The Feynman lecture. चलो जी. Key contributions in lectures: quantum mechanics explained beautifully. Instead of using complicated math, he introduced the path integral formulation, which treats quantum particles like summing over all possible histories. Introduced the double spectrum in a way that made quantum weirdness easy to grasp. Electricity and magnetism redesigned. Instead of just using Maxwell equation, special what is special relativity? Special relativity. Yeah, ये जो मैं बात शुरू में कर रहा था. Emphasized that science is about asking questions, not just memorizing formulas. That's the thing. जिसने सवाल पूछना सीख लिया वही साइंस को समझ सकता है. अब तो बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है. नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फार्मूलाज तो ये जीपीटीज भी मेमोराइज कर सकते हैं. उनके पास सारा डाटा है. जो सारा डाटा इंफॉर्मेशन हमें अपने दिमागों में भरने की क्या ज़रूरत है जब हमारी मशीन उनको अपने पास रख सकती है. जब ज़रूरत पड़े उनसे पूछ लो. क्रिएटिविटी, सवाल पूछना, ये हमारी खासियत. हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना, हर चीज़ को लीड करना ऐसे यूनिक वे में कि जो अभी मशीन भी नहीं कर सकती. अगर कल को मशीन कर भी ले तो फिर भी हमें उस पर एक एज होगा अनप्रडिक्टेबिलिटी का. हमारे तालीमी निज़ाम में अनप्रडिक्टेबिलिटी ही सबसे पहले ख़त्म की जाती है. गधे की तरह पहली जमात से लेकर पीएचडी तक हर चीज़ पहले से तय कि भाई बच्चे ने यहाँ चलना है. वो इंसान है, गधा नहीं है. ऐसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए हर बच्चे के लिए जो पर्सनलाइज्ड हो. एक इंसान जो यूनिक है
उसका फुटप्रिंट पूरी यूनिवर्स में यूनिक है। उस जैसा दूसरा इंसान नहीं एग्जिस्ट करता। अगर कोई एक अहमद है तो वो पूरी यूनिवर्स में एक ही अहमद है, पास फ्यूचर में। अगर कोई उस्मान है तो पूरी यूनिवर्स में एक ही है। तो फिर उसकी लाइफ भी डिफरेंट है, तो उसकी तालीम भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसीलिए हमारा साकिल एज ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो मैं हमारा 2030 से 2033 तक, 2030 से 2033 तक जो हमारा एजुकेशनल मॉडल होगा, उसको जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो इस तरीके का कर रहा हूँ कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये बच्चा ये 4 साल बाद कहाँ होगा। यकीनन हो सकता है वो 4 साल बाद वहाँ खड़ा हो, जो उसके बराबर का बच्चा 20 साल बाद भी वहाँ खड़ा ना हो। तो उसे आगे बढ़ने का ज़्यादा तेज़ी से मौका मिलना चाहिए। और वो सिलेबस बेस्ड नहीं है, बल्कि टारगेट बेस्ड है। एक ख़ास लेवल तक बच्चे को पहुंचना है, वो चाहे 6 माह में पहुंच जाए या 1 महीने में पहुंच जाए, या वो बच्चा इतना काबिल है रातों रात पहुंच जाए, या दूसरा बच्चा वहां तक 2 सालों में नहीं पहुंच सका तो वो ना पहुंचे। लेकिन यहाँ भी एक सोचने वाली बात है कि वो 2 सालों में बच्चा क्यों नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ उस चीज़ में रेजोनेट करती ही नहीं है जिसमें शायद हमें जोर लगा रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा फील्ड होगा यकीनन जिसमें उसका इतना इंटरेस्ट होगा कि वो उसमें एक रात में उतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा जितना दूसरा इंटेलिजेंट बच्चा, वो एक रात में बढ़ने वाला 2 सालों में भी नहीं बढ़ सकता। तो हर इंसान अलग अलग चीज़ में माहिर है। यही इंसानों की खूबसूरती है, डिफरेंशिएशन, सोच में तनाव, तनव्वुह। बर्थ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, वाई नॉट स्मॉलर एंड प्रिसाइज। देखो इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट मोलिकुलर लेवल मशीन डेट मैनिपुलेट एटम डायरेक्टली, जो एटम्स को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सके। इन्होंने आज भी ये अप्रोच छोड़ी नहीं होगी। स्टोरेज का मसला ही खत्म। डीएनए डाटा स्टोरेज, वेरी वेरी वेरी
आने वाले दिनों में जो बहुत ज़्यादा ये फील्ड आगे आएगा, डीएनए डाटा स्टोरेज। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ, अगर नैनोबोट्स बन सकते हैं ना एटॉमिक लेवल पर, इसका साफ और सिंपल मतलब है, जो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, कि हम पूरे पूरे प्लैनेट्स जितने स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। और वो डायसन स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट, पूरे पूरे स्टार्स की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, अगर हम इतना नीचे जा सकते हैं स्केल में, तो इतना ऊपर भी जा सकते हैं। ये अभी तक इसमें बहुत सारा काम होने वाला नैनो टेक्नोलॉजी में। हम्म, क्या बात। फॉर ए सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी रियलिटी मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर पब्लिक रिलेशन, फॉर नेचर कैन नॉट बी फूल्ड। क्या नेवर इग्नोर साइंस फॉर पॉलिटिक्स। आह, बदकिस्मती, हमारे जो अकाबरीन है साइंस को तो पता नहीं कि एलियंस की तहजीब समझते हैं, तो वो इग्नोर किया, साइंस का नामो निशान ही ख़त्म किया हुआ। इसका एक और बन सकता है कि इफ़ यू अडोप्ट साइंस यू कैन रेवोल्यूशनाइज पॉलिटिक्स। हमारे जैसे माशरों में अगर कोई साइंस को अपना ले, तो वो अपनी पॉलिटिक्स को उस लेवल तक लेके जा सकता है कि मरते दम तक शायद कोई उसके मुतबादल की ज़रूरत ना पड़े, चाहे वो काला चोर ही क्यों ना हो, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी वो चीज़ें दे सकती है, वो मसाइल हल कर सकती है कि एक बंदा जिसे सारे लोग बुरा समझते हैं, चंद ही सालों में उसकी वाह वाह करने लग जाएंगे। आखिर इल्म सबसे बड़ी ताकत है। चलो आगे उसका लास्ट वर्क है क्वांटम ग्रेविटी। What was the main problem? Quantum mechanics described particles at tiny scales. General relativity described gravity at cosmic scales. तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था।
ग्रेविटॉन्स येट टू डिस्कवर। लेकिन ग्रेविटॉन्स यानी ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने में ही स्पेस टाइम फैब्रिक को अंडरस्टैंड करने की तरफ दरवाज़ा खुलता है। सो जो ग्रेविटी को सबसे पहले मुकम्मल एक्सप्लेन करेगा, चाहे वो जितना भी आखिर पे शुरू हुआ हो, वो सारी साइंटिफिक रेवोल्यूशन को लीड करने लगेगा। क्वांटम मैकेनिक्स और एस्ट्रोनॉमी का तो पक्का ही। सो यही साकी लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का मोटिव है। कोई बात नहीं अगर हम सबसे पीछे रह गए हैं, अगर हम आज खड़े होते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ फील्ड पॉइंट्स, जो हमारा एक एजुकेशनल मॉडल है और वर्किंग मॉडल है, फील्ड पॉइंट्स पर काम करते हुए चंद सालों में हम हर फील्ड के जो अब के टिपिंग एज हैं, आखिरी जो रिसर्च के मसाइल हैं, उनको हम हल करने लगते हैं। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग तो हमारे पास आएंगे। थोड़े ही अरसे में पूरी साइंटिफिक एवोल्यूशन को हम हाईजैक कर सकते हैं। अगर मौका मिला तो करेंगे भी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि शुरू किसने किया था? अगर हर टेक्नोलॉजी के एंड पे हमारा नाम लगे, अगर हर टेक्नोलॉजी के एंड पर हमारे बच्चे कोई ना कोई नई चीज़ बना रहे हों, तो यकीनन साइंटिफिक फील्ड में हमारा ही राज होगा। ग्राउंड वर्क था स्ट्रिंग थ्योरी के लिए, लूप, क्वांटम ग्रेविटी एंड अदर मॉडर्न आइडियाज। लूप, क्वांटम ग्रेविटी।
आई वुड हेट टू डाई ट्वाइस, इट्स सो बोरिंग। शायद अपने लाइफ वर्क के बारे में कह रहे थे। ओके, हमारा नेक्स्ट बंदा है कुर्जवेल। शुक्र है काफी लंबा ही हो गया था। नो कुर्जवेल इज द लास्ट। चलो यस, आखिरी थिंकर है, जरा इसे भी खत्म करें। हु इज रे कुर्जवेल? 1940 अमेरिकन इन्वेंटर, फ्यूचरिस्ट। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, transhumanism, the singularity and exponential technological growth. Great, interesting है ये तो बंदा। Works in AI, pattern recognition, longevity, futurism. Great. Works in accurate prediction about technology trends since 1980s. Critical major contributions and research. Optical character recognition, OCR 1970s. Well, the first OCR software that could read any font used by blind Kurzweil reading machine, later acquired by Xerox and became industry standard. Optical character recognition, ठीक है। Speech recognition and text to speech 1980s, क्या बात है। First speech to text systems for people with disabilities, great। Kurzweil music synthesizer, digital instrument that makes real sounds। वाह, ये 1980s में काम किया और हम आज मजे ले रहे हैं इनके। देखो पाकिस्तानियों, आज भी कितने ही लोगों को दूसरों की साउंड मिमिक करने वाले सॉफ्टवेयर अजीब लगते हैं। वाह, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आ गई। 1980s, हमारे दादे जब जवान थे उस वक्त वो इन सारी चीज़ों को अचीव कर चुके थे। कोई बात नहीं, अगर हम आज शुरू करें तो 25-30 साल बाद हम भी इनसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आज शुरू करें। Led to modern AI powered speech assistant, Siri, Google Assistant, pioneered machine learning and neural networks before they became mainstream. Technology grows exponentially, यही लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स है जो हमारे लिए एक मोटिवेशन है। कोई नहीं, अगर आज हम 0 पे हैं कल 1 पे होंगे, परसों 4 पे, 8, 16, 32, इस तरह हम ग्रो करेंगे। और Moore's law, computer power doubling every year, is part of this trend. In those around 2045 AI will surpass human intelligence, सुपर इंटेलिजेंस। लेकिन ये डेट नज़दीक से नज़दीक आती जा रही है। Humans will merge with AI and nanotechnology leading to immortality। वाह, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
अपलोडेड इंटेलिजेंस यूआई, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही लीस्ट मेन स्ट्रीम में कवर्ड है, मतलब इसके बारे में इतना श्योर नहीं था, लेकिन ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और पॉसिबल काम है जिस पर हो रहा है। इलोन मस्क का न्यूरालिंक भी यकीनन बैक एंड पे इसी पर भी काम कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन को अपलोड किया जा सके। currently works at गूगल। ठीक है, accurate technology predictions, OCR speech machine learning, the idea of merging humans with AI predictions influences AI research, biotech and space exploration। ठीक है, एक्सप्लोर। वन बाय वन इसका वर्क एक्सप्लोर करते हैं। पहला है ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, ओमनी फॉन्ट सॉफ्टवेयर which could recognize and read painted text in any font। 1970s में। कुर्ज़वेल फाउंडर है टेक्स्ट टू स्पीच और रिकॉग्निशन, टेक्स्ट रिकॉग्निशन मॉडल्स का। early machine learning models for text to speech processing। Patents, his innovation became the basis of modern voice assistant, Alexa, Siri, Google Assistant, AI powered voice assistant, automated customer service and accessibility tools। 1990s to 2000, early AI research, Kurzweil predicted that AI would simulate human cognition and learn from data patterns, created neural network models for AI driven text and speech analysis। Research and patents, developed self-learning AI models, early precursors to deep learning। यानी जो अभी हम AI देख रहे हैं उसको डेवलप करने में इस बंदे का भी बड़ा हाथ है और एक्टिवली अभी भी काम हो रहा है। द एज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन, वन द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स प्रेडिक्टिंग AI's rise, laid groundwork of ChatGPT, DeepMind Alpha and AI based automation। जरा इस बुक की समरी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये बुक क्या कहती है। द एज ऑफ इंटेलिजेंट, ठीक है। ये हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसकी एवोल्यूशन है, ट्रेसेस फिलोसॉफिकल मैथमेटिकल टेक्नोलॉजिकल रूट्स ऑफ एआई, डिस्कस हाउ एडवांसमेंट। ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटेलिजेंस, द बुक आर्ग्यूज दैट ह्यूमन इंटेलिजेंस evolved through natural process, suggesting that humans can create machines more intelligent than themselves। Kurzweil emphasizes the importance of pattern recognition। देखो, ऐसी कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको मुकम्मल पढ़ने पे टाइम ज़ाया करने के बजाय, खैर अगर किसी के पास काफ़ी इजाफी टाइम है या वो फील्ड स्पेसिफिक है, जैसे हमारे बच्चे फील्ड पॉइंट्स में माहिर होंगे, तो यकीनन उनका बनता है कि वो बुक्स को डिटेल से पढ़ें। लेकिन मेरे जैसे जर्नलिस्ट, जो कि अब दुनिया में एक नया फील्ड है, कि वो ओवरऑल ह्यूमैनिटी के नॉलेज को, मुकम्मल जितना नॉलेज है उसको देख रहे हैं और उसको साथ साथ डायरेक्शन भी अपने तय दे रहे हैं, उनके लिए बेस्ट तरीका है वो जल्दी से जल्दी समरीज बुक्स की पढ़ सकें।
द लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स, टेक्नोलॉजी जो है उनको लिनियरली एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर जल्द ही ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस सरपास कर जाएंगे। द एज ऑफ स्पिरिचुअल मशीन्स, ये वुड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेफिनेटली, और वो बनना शुरू भी हो गई है। एआई ड्रिवन पर्सनल असिस्टेंट, क्लाउड बेस्ड इंटेलिजेंस inspired companies like Google, OpenAI, IBM to invest in AI, used by futurist economists and scientists to model technological progress. The Singularity and Future of AI 2005। The Singularity Hypothesis, हाइपोथेसिस क्या है कि 2045 में एआई विल सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस आ जाएगी। ठीक है। एआई विल इम्प्रूव इटसेल्फ एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ह्यूमंस विल मर्ज विद एआई थ्रू ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, बेहतरीन। इस पर तो हमने अपनी पूरी ब्रांच बनाई है, हमारी पहली कोड 100 की 100 ब्रांचेस में से। सिंगुलैरिटी इज नियर, प्रेडिक्ट्स दैट एआई, नैनोटेक एंड बायोटेक्नोलॉजी विल लीड टू इमॉर्टैलिटी, बिल्कुल ठीक है। आर्ग्यूज दैट ब्रेन अपलोडिंग टू ह्यूमन एंड एआई फ्यूजन विल बी पॉसिबल। अब 2045 की टाइमलाइन ऑप्टिमिस्ट, हाँ 2020 से पहले ऑप्टिमिस्टिक थी, लेकिन 2020 के बाद जितनी तेज़ी के साथ एआई पर काम हुआ है, अब बिल्कुल भी ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 2045 से पहले ही ये 2029-30 तक की सिंगुलैरिटी हो सकती है। न्यूरोलिंक, लीव टू इंक्रीज फोकस, एआई सेफ्टी एंड एथिकल कंसिडरेशन। नैनो टेक्नोलॉजी, लॉन्गेविटी, रिवर्स एजिंग, कुछ प्रेडिक्शन, ह्यूमन नैनोबर्स विल बी ह्यूमन सेल्स एंड प्रिवेंट एजिंग। इसका बहुत ही फ्यूचर है, ऐसे नैनोबर्स जो ह्यूमन सेल्स को रिपेयर करेंगे और एजिंग को प्रिवेंट करेंगे। इस पर बहुत फोकस करना चाहिए। एआई पावर्ड मेडिसिन विल कस्टम टेलर ट्रीटमेंट फॉर, बेहतरीन। ये तो हमारे भी साकी लैब्स की 100 कंपनीज में ये है, ऐसे हॉस्पिटल्स जो हर इंसान की पर्सनलाइज्ड डायग्नोस्टिक और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे वो काम करें। ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि 2030 तक ह्यूमन विल स्टॉप एजिंग यूजिंग एआई ड्रिवन बायोटेक। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2030 तो सर पे आ खड़ा है, हो भी सकता है। ट्रेसेंड 9 स्टेप्स टू लिविंग वेल फॉर एवर। अच्छा, ज़रा इसको देखें, ये बुक क्या कहती है। ट्रांसेंड 9 स्टेप्स टू लिविंग वेल फॉर एवर इज अ बुक बाय रिकॉर्ड वेल, ठीक। समराइज विद द निमोनिक ट्रांसेंड, टॉक विद योर डॉक्टर, ठीक है। बुक क्या कहती है, सबसे पहले टॉक विद योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से बात करो। बिल्ड अ प्रोएक्टिव रिलेशन विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर के साथ अच्छा रिलेशन कायम करो। दूसरा, रिलैक्सेशन, मैनेज स्ट्रेस थ्रू टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन, मीनिंगफुलनेस। रिलैक्सेशन, अपने आप को रिलैक्स करो। तीसरा, असेसमेंट, रेगुलरली मॉनिटर योर हेल्थ थ्रू मेडिकल टेस्ट एंड सेल्फ असेसमेंट, अपनी अपनी हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करो, असेस करते रहो। न्यूट्रिशन, फॉलो अ बैलेंस्ड डाइट, गेट रिच न्यूट्रिएंट्स एंड डेट लो इन हार्मफुल सब्सटेंसेस, अपनी डाइट पर फोकस करो। सप्लीमेंटेशन, यूज सप्लीमेंट्स टू एड्रेस स्पेसिफिक हेल्थ नीड, अगर कोई कमी हो रही है खास चीज़ों की तो उनके सप्लीमेंट्स यूज़ करो। फिर कैलोरी रिडक्शन, प्रैक्टिकल माइंडफुल ईटिंग एंड मेंटेन हेल्दी वेट, यानी ओवर ईटिंग ना करो। इन शॉर्ट, एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट बोथ एरोबिक एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनटू योर रूटीन, ठीक है। यानी एक्सरसाइज करो, न्यू टेक्नोलॉजी, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इमर्जिंग मेडिकल एंड बायोटेक एडवांसमेंट। डिटॉक्सिफिकेशन, रिड्यूस एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स एंड सपोर्ट योर बॉडीज नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस। क्या बात, यानी ये 9 स्टेप दिए हैं कि कैसे आप एक लंबी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो साकी लैब्स ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का, हमारे साकी हॉस्पिटल्स हैं या उनकी जो हॉस्पिटल चेन्स होंगी, उनमें इन सारी चीज़ों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है। अगर आप
उनकी मेंबरशिप लेंगे या उनमें जाएंगे, आपके रेगुलर चेकअप्स भी होंगे, आपके पर्सनलाइज्ड डॉक्टर्स भी होंगे। वो आपको रिलैक्सेशन और असेसमेंट और न्यूट्रिशन के बारे में कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस भी दे रहे होंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज होंगी वो जब इंटीग्रेट होंगी तो यकीनन ह्यूमन लाइफ लॉन्गेविटी में, लंबी ज़िंदगी जीने में, अगर ज़िंदगी रही तो हम सबसे पेश पेश होंगे। Discuss AI nanotechnology and biohacking as tools for immortality. Advocates the gene editing, cellular repair, and anti-aging therapies led to breakthrough in CRISPR gene editing, longevity, research AI power मेडिसिन। ठीक है, इंस्पायर्ड एलोन मस्क न्यूरल। मैं पहले यही सोच रहा था जब ऊपर इसने ह्यूमन मशीन इंटरफेस की बात की कि न्यूरल लिंक भी ज़रूर एलोन मस्क इसी से इंस्पायर हुआ होगा। भाई एलोन मस्क इसी से इंस्पायर हुआ है भाई। एआई ड्रिवन न्यूरो साइंस रिसर्च, कुर्जवेल करंट वर्क एट गूगल। ठीक है, अभी वो हयात है और गूगल पे काम कर रहा है, फोकस on ह्यूमन लाइक मशीन इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस, एनएलपी एंड सेल्फ लर्निंग एआई मॉडल्स। सही है, डेवलपिंग एआई दैट अंडरस्टैंड इमोशन और ह्यूमन कॉग्निशन। अब वो इससे आगे वो काम कर रहे हैं कि ऐसी एआई जो ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके। बाइनरीज ओसीआर, ठीक है, स्पीड रिकॉग्निशन, प्रेडिक्टिव एआई ग्रोथ, ठीक है, थियोराइज एआई ह्यूमन इमर्जेंट, सिंगुलरिटी बिलीव्स एआई will emerge humans achieve immortality, believes AI will help humans achieve immortality, influence AI, Google OpenAI, Neuralink, Biotech and longevity। ओके, हमारा आज का टारगेट पूरा हो गया। हमने 3 साइंटिस्ट का पूरा लाइफ वर्क को देखा। अब हफ्तारी से पहले हम थोड़ी देर चैट जीपीटी के साथ डिबेट करेंगे और फिर खुदा
What should I call you? You can call me whatever you like. Some people refer to me as ChatGPT, Assistant, or just simply AI. If you have a preferred name, feel free to use that too. What would you prefer? Assistant? Got it. You can call me our system if that feels fitting for you. I'm here to assist with anything you need. What's next on the agenda? Okay, we would analyze uh, critically some of the work of Kurzweil, especially about nanotechnology and his prediction. That sounds like a fascinating direction. Ray Kurzweil's work, particularly his predictions about nanotechnology and his views on the future of human progress, is quite intriguing. His ideas have sparked both excitement and skepticism in various scientific communities. Kurzweil is known for making bold predictions about the future, especially in the areas of artificial intelligence, nanotechnology, and biotechnology. His book, The Age of Spiritual Machines and the Singularity is Near, are two key texts where he discusses his predictions. In terms of nanotechnology, Kurzweil believes that nanobots will eventually be able to work at the cellular level to repair tissue, fight diseases, and even enhance human capabilities. He has predicted that by the 2030s, advances in nanotechnology will allow humans to reverse aging and achieve a form of immortality. Critically analyzing his predictions. 1. Optimism versus realism. Kurzweil's optimistic timeline for technological breakthroughs often faces skepticism from many in the scientific community. While progress is being made in nanotech, the complexity of the tasks he envisions, such as repairing individual cells or reversing aging, faces enormous challenges that are still far from being solved. 2. Ethical and societal concerns. With technologies like nanobots potentially in the hands of individuals, there are vast concerns about misuse. The impact on privacy, security, and inequality are questions that Kurzweil's predictions sometimes gloss over. 3. The exponential growth of technology. Kurzweil argues that technological growth follows an exponential curve, meaning it accelerates faster and faster as time passes. Okay, While this is supported by some evidence, others okay, argue that the okay. pace of innovation may hit Listen, listen. physical or economic limits that will slow down this progress. 4. Singularity and human enhancement. Kurzweil Try to make this critical analysis as a debate. You speak something and give some time me to add some points to it. Okay? Sure, let's have this as a back and forth debate style. I'll start Yes, with a point, and then you can counter or add your thoughts as you see fit. Point definitely. 1. Technological optimism versus realism. Kurzweil's predictions about nanotechnology and other futuristic technologies are rooted in his belief in exponential growth, where progress accelerates faster over time. While this approach has some merit, e.g., Moore's law with computing power, it overlooks the inherent challenges in translating this growth to complex systems like human biology. Nanobots capable of repairing cells or reversing aging are still decades away, at best. The scale of miniaturization, precision, and biocompatibility required to make these technologies feasible raises serious questions about how realistic his timelines are. Now, over to you. What do you think about Kurzweil's timelines and optimism? I think if we analyze closely the evolution of AI, we can say it's realistic because from 1980s to 2020s, the speed of evolution of AI was very slow, and we can say just like nanobots, it was below the predicted speed. But when we see from 2021 to 2025, these 4 years on
overall speed, they just You make a valid point. The rapid advancements in AI in recent years, especially from 2021 to 2025, demonstrate a shift toward exponential progress. Technologies like GPT models and breakthroughs in deep learning are evolving faster than anyone anticipated. This sharp acceleration gives some credence to Kurzweil's idea that technological growth could follow an exponential curve. However, AI is still very different from nanotechnology. While AI advancements can be driven by improving computational power and better algorithms, nanotechnology involves working within the complexities of the physical world at a molecular or cellular level. There's no clear path to scaling up technology that can repair living tissue or reprogram cells, especially in a biologically safe and efficient way. It's a whole different ballgame that might not follow the same pattern of rapid advancement seen in AI. What's your take on how the leap from AI to nanotech might unfold, given this difference? yes, your point is valid that AI is in cyberspace quite different, while nanotechnology is in physical space and especially at nanoscale level. Yes, which is very different. But Exactly. And the difference in the nature of the two technologies is crucial. AI operates in a virtual digital realm where the rules are more flexible and where improvements can be accelerated through better algorithms and hardware, something that doesn't face the same physical limitations as nanotechnology. Nanotechnology, on the other hand, is confined by the laws of physics, chemistry, and biology. While we've made strides in areas like drug delivery systems and materials engineering, the complexity of manipulating matter at the molecular or atomic scale to repair cells, let alone perform complex biological tasks, presents challenges that go beyond just technical hurdles. There are also concerns about safety, ethics, and even the unintended consequences of manipulating biology so directly. Now, one argument that supports Kurzweil's optimism is that just as we've developed technologies like CRISPR gene editing and tissue engineering in recent years, it's possible that with the right breakthroughs, we could reach a point where nanobots can be effectively integrated into the human body. But the question remains, what kind of timeline are we really looking at? And is Kurzweil's predicted time frame of the 2030s too optimistic? What's your view on that? definitely, I completely disagree with the timeline of 2030s. When we see our current progress in nanotechnology, it's something close to zero because we haven't yet invented any nanobot capable of doing work in physical world. I mean, without biology, and working with biology is even more sophisticated and difficult. Even 2050 is a very optimistic timeline. But my question is, what are the challenges? I Uh, completely agree with you. The current state of nanotechnology, while promising in some areas, is far from where Kurzweil envisions it to be in just a few decades. We're still in the phase of exploring the fundamental principles of nanomaterials and understanding how to manipulate them on a molecular level. Even the most advanced projects in nanomedicine, such as targeted drug delivery systems, are far from the capabilities that Kurzweil predicts, like fully autonomous nanobots repairing tissues or reversing aging. In fact, working with biological systems adds layers of complexity: biocompatibility, preventing immune system rejection, managing the energy requirements of tiny machines within the body, and ensuring they don't cause unintended harm are just some of the challenges we face. The difficulty of interfacing physical systems with biological systems on a scale as small as nanobots cannot be underestimated. The idea of nanobots performing highly complex, life critical tasks inside the human body is still speculative at best, and even by 2050, the challenges may not be overcome. The leap from lab research to practical, real world application is enormous, and timelines in nanotechnology often turn out to be much longer than initially projected. What do you think would need to change in terms of breakthroughs or innovation to make nanobots a reality? And do you think we're underestimating how long this might take?
I think uh, now with the help of AI, we can Fighting, afford. fighting. That's the spirit. Let's keep pushing forward and questioning assumptions. Only by doing that can we truly uncover the potential of these technologies. I'm enjoying this debate, so let's keep challenging these ideas. What's next on Okay, your mind? okay. Try to complete me my sentences. When I say okay, your turn, then you start. Got it. I'll complete your sentences, and when you say your turn, I'll take it from there. Thank you. Ready when you are. Okay. I was saying You're with welcome. with the help of AI, AI can help us a lot in We can researching many accelerate our fields. understanding of complex systems, analyze vast amounts of data quickly, and make connections that humans alone might not see. Your turn. Definitely, definitely. But I was saying, I was thinking first try to AI can also enhance creativity by suggesting novel ideas, solving problems more efficiently, and even helping to create new models of the universe. Your turn. can you summarize what is our progress in nanotechnology and what are the main issues and factors limiting our progress? Certainly, nanotechnology has made significant progress over the past few decades, but there are still many challenges that need to be overcome. Here's a brief summary. Progress in nanotechnology, nanomaterials. Advances in the creation of nanomaterials like carbon nanotubes, graphene, and quantum dots have shown great potential in areas like electronics, energy storage, and medicine. Drug delivery, targeted drug delivery systems, such as nanoparticles used to deliver chemotherapy directly to cancer cells, have been developed and are showing promise in clinical settings. Sensors and diagnostics. Nanoscale sensors are being used in diagnostics, detecting diseases at much earlier stages and improving the sensitivity of tests. Main issues and factors limiting progress. 1. Fabrication complexity. Creating precise and functional nanostructures on a large scale remains extremely difficult. While there are breakthroughs in lab environments, scaling these technologies for mass production is still a significant hurdle. 2. Energy requirements. Most nanobots or nanodevices would need an efficient power source to function, but current methods of energy generation at the nanoscale are limited. Powering these devices inside the human body or other complex systems is still an unsolved challenge. 3. Biocompatibility. When working with biology, the materials used need to be biocompatible to avoid rejection or harmful reactions in the body. Ensuring that nanomaterials do not cause toxicity or trigger immune responses is a major concern. 4. Regulation and safety. There is a lack of clear regulatory frameworks for nanomaterials, which slows down innovation. The potential risks associated with the release of nanomaterials into the environment or the human body need to be carefully evaluated. 5. Ethical concerns. The potential to manipulate biology at the molecular level raises ethical questions about the use of nanotechnology, especially in medicine, surveillance, or military applications. These concerns could slow development and implementation. While progress has been steady, nanotechnology still faces these significant hurdles before it can live up to its full potential. What are your thoughts on which of these issues could be overcome first? Uh, Tell me, what is the smallest fully functional machine humans have yet invented? The smallest fully functional machine invented so far is a nanomachine made up of just a few molecules. One of the notable achievements is the creation of molecular machines, like the ones developed by researchers like Jean-Pierre Sauvage, Fraser Stoddart, and Bernard L. Feringa, all of whom won the Nobel Prize in Chemistry in 2016 for their work in molecular machines. These molecular machines are built using DNA or other molecular components and can perform simple mechanical tasks, like rotating or moving in response to chemical signals. For example, one such molecular machine is a rotary motor made of molecules that rotates in response to light.
These are still far from the complexity of something like a nanobot that can carry out complex tasks autonomously, but they represent the cutting edge of what is possible at the nanoscale. However, in terms of actual machines that perform work on the nanoscale, we're still a long way from creating something like the nanobots envisioned in science fiction. The small functional machines we've created today can perform basic tasks, but they still need precise control and the development of practical applications. What are your thoughts on how we might overcome the next barriers for truly functional nanomachines? Okay, we start talking from uh, aging. Let's explore in detail about aging. Are the Aging is a complex biological process characterized by the gradual decline in the function and structure of an organism over time. It's a multifaceted phenomenon that involves genetic, environmental, and cellular factors. Let's break down the key aspects of aging and the scientific theories behind it. Key theories of aging. 1. Genetic program theory. This theory suggests that aging is pre-programmed in our genes. It is believed that there are specific genes that regulate the growth and development of an organism, and once they reach a certain point, they begin to slow down or malfunction, leading to aging. Example: telomeres, protective caps on chromosomes, shorten with each cell division, which may eventually limit the ability of cells to divide and function properly, leading to aging. 2. Damage or wear and tear theory. This theory posits that aging occurs due to the accumulation of damage at the molecular and cellular levels over time. This can be caused by free radicals, environmental stressors, and other damaging agents that accumulate in cells and tissues, leading to their degradation. Example: oxidative stress theory suggests that free radicals, unstable molecules, damage cell components like DNA, proteins, and lipids, contributing to aging. 3. Mitochondrial dysfunction theory. Mitochondria, the powerhouses of cells, produce energy but also generate free radicals as a byproduct. Over time, mitochondrial damage accumulates, which leads to impaired cellular function and aging. Example: mitochondrial DNA damage is thought to contribute to aging and age-related diseases. 4. Hormonal and epigenetic changes. As we age, our hormonal systems begin to decline, with changes in the regulation of key hormones like growth hormone, insulin, and sex hormones, e.g., estrogen and testosterone. These hormonal changes impact metabolism, immune function, and tissue repair. Epigenetic modifications, changes in gene expression without altering the underlying DNA sequence, also influence aging. These modifications can alter how genes are activated or silenced, which may accelerate the aging process. 5. Cellular senescence. Cellular senescence refers to a state in which cells stop dividing but do not die. These cells accumulate over time and secrete harmful molecules that cause inflammation and disrupt tissue function. They contribute to age-related diseases like osteoarthritis, cardiovascular disease, and neurodegenerative disorders. Senescence is a natural defense mechanism to prevent damaged cells from becoming cancerous, but the accumulation of senescent cells contributes to aging. 6. Stem cell exhaustion. Stem cells are responsible for repairing tissues and regenerating damaged cells. As we age, the number and functionality of stem cells decline, leading to decreased regenerative capacity and contributing to aging. 7. Inflammation. Inflammaging, chronic low-level inflammation, often referred to as inflammaging, is associated with aging. This low-grade inflammation can damage tissues and increase the risk of age-related diseases like Alzheimer's, cardiovascular disease, and diabetes. Key factors accelerating aging. 1. Genetic factors. Some people have genetic predispositions that make them more likely to age more quickly or develop age-related diseases. Conversely, certain genetic mutations are linked to longer lifespans, e.g., those in the have you longevity genes forgotten like we FOXO3. were debating 2. Lifestyle and environmental factors. what Factors such as diet, exercise, exposure to toxins, e.g., smoking, pollution, and stress can accelerate aging. For example, a poor diet rich in processed foods can increase oxidative stress, while regular exercise can improve mitochondrial function and reduce inflammation. 3. Oxidative stress. The continuous production of free radicals and the body's reduced ability to neutralize them contributes significantly to aging.
Antioxidants, e.g., vitamin C, E, can help mitigate this process, but their effectiveness is still debated. 4. Inflammation. Chronic inflammation, which can be triggered by lifestyle factors like poor diet, stress, and lack of sleep, accelerates aging and contributes to various diseases. 5. Telomere shortening. Every time a cell divides, the telomeres, protective caps on chromosomes, get shorter, and when they reach a critical length, the cell can no longer divide. This process is linked to aging and age-related diseases. What is being done to combat aging? 1. Anti-aging research. Research into anti-aging drugs like senolytics, which target and eliminate senescent cells, is ongoing. CRISPR-Cas9 gene editing technology is being investigated for its potential to repair damaged DNA and extend healthy lifespan. Stem cell therapy is being explored to replenish damaged tissues and So, in short, we don't exactly know what are the main causes of aging. There are just theories. Without knowing the exact causes of aging, we can't stop or slow down it. Yes, exactly. While we have several well supported theories about aging, we don't yet have a definitive answer as to the exact cause or causes. Aging is incredibly complex and likely involves a combination of multiple factors that interact in ways we don't fully understand yet. Without pinpointing the precise mechanisms, it's hard to develop targeted treatments or interventions to slow or reverse the process in a meaningful way. In short, because we can't yet isolate the root cause, we can only treat or mitigate its effects by addressing the various factors contributing to it, whether that be oxidative stress, telomere shortening, mitochondrial dysfunction, or others. However, research is progressing and we are learning more every day. What are your thoughts on how we could approach solving this? Or do you think that discovering the root cause will require new frameworks or breakthroughs? I would say it with a different approach. I think if we want to solve this aging problem, we will have to combine biology and chemistry. And I think the main issue we are facing is that we are unable to uh, combine chemistry and biology at very core level of our DNA or our cellular level. That's an interesting approach. Combining biology and chemistry, especially at the molecular and cellular levels, seems to be a crucial step toward understanding and potentially mitigating aging. It's true that aging doesn't occur in isolation within a cell. It's influenced by both the biochemical reactions happening within the cell and the biological processes driving the function of the organism. One of the biggest challenges lies in understanding how these two fields can be integrated at a microscopic level, particularly in terms of how molecules interact within our DNA and other cellular components. DNA repair mechanisms, the regulation of gene expression, and how cells manage oxidative stress are all deeply intertwined with chemical processes. Understanding how to manipulate these processes effectively without unintended consequences will be key to advancing anti aging interventions. For instance,
We already have some understanding of how certain chemical compounds can impact gene expression or enhance the body's natural repair mechanisms. But fully understanding how to control these processes at a systemic level is a different challenge. What kinds of tools or technologies do you think will be needed to make these kinds of breakthroughs? And do you see AI or nanotechnology playing a role in helping combine these fields? Yes, AI is very crucial because when we are talking about aging, even it's about the aging of a microorganism or a single cell organism, we have to input or analyze the complete data of that living organism. And the data in DNA is very condensed, and such a vast amount data cannot be analyzed without uh, using AI. Absolutely, AI is essential in analyzing the vast complex data contained within the DNA of organisms. The amount of information encoded in our genetic material is staggering, and deciphering it manually or with traditional computing methods would be almost impossible. AI, especially machine learning and deep learning algorithms, can help us process and identify patterns in genetic data that would be too subtle for humans to catch. For instance, AI can be used to track gene expression over time, understand how genes interact with each other, and even predict how certain interventions may affect aging. In the case of aging research, AI could help in several ways. One, identifying key genetic markers. By analyzing large data sets, AI can help identify genes or mutations that are linked to longevity or age related diseases. This would allow us to better understand which genetic changes are most impactful on the aging process. Two, predictive modeling. AI can create models of biological processes and predict how different factors, e.g., lifestyle, environmental factors, treatments, might affect aging. For example, AI could help predict how certain interventions might delay the onset of aging or extend lifespan. Three, personalized medicine. AI can help develop more personalized anti aging strategies by analyzing an individual's genetic makeup, lifestyle data, and health history. This would allow for targeted interventions that are more effective than a one size fits all approach. 4. Simulating cellular processes. AI can be used to simulate complex cellular processes in real time, which can help researchers understand how cells age, how mutations accumulate, and how interventions may slow down or reverse these processes. In combination with nanotechnology, AI could also play a role in precision medicine. Nanobots or other nanomaterials could potentially be used to target specific cells or tissues, delivering treatments or repairs precisely where needed. And AI would be the driving force behind controlling these processes with extreme accuracy. In short, AI could make it possible for us to decode the immense complexity of biological aging, helping us find patterns, predict outcomes, and create personalized treatments. Do you think AI's current capabilities are sufficient to start making significant strides in this area, or do we need further advancements in AI before we can tackle something as complex as aging? Rest, the talk about nanotechnology. Nanotechnology is not compulsory to start researching on AI aging, but nanotechnology can help us to gather a vast amount of data at cellular level, as we can see what's happening inside a cell with our nanobots. What do you think? You're absolutely right. While nanotechnology is not strictly necessary for AI to help us understand aging, it can certainly play a crucial role in gathering the data we need at a cellular level. The combination of AI and nanotechnology can enhance our ability to observe and analyze biological processes with unprecedented precision. Here's how nanotechnology could specifically help with aging research. 1. Cellular monitoring. Nanobots or nanosensors could be used to continuously monitor cellular activity in real time. By observing the processes happening within individual cells, we could gather detailed data on how they age, what kinds of damage accumulate over time, and how different interventions might slow down or reverse those processes. For example, nanobots could track telomere length,
oxidative stress levels, and protein folding, all of which are related to aging. 2. Targeted drug delivery. Nanotechnology can also be used to deliver drugs or genetic materials directly to specific cells. If we identify certain genes or cellular pathways that contribute to aging, we could use nanobots to deliver interventions precisely to the right location in the body, reducing side effects and increasing effectiveness. AI could help design these interventions by predicting which therapies would work best for specific genetic profiles. 3. Cell repair and regeneration. Nanotechnology could be used to repair damaged cells or even replace faulty components within a cell. For example, nanobots could be engineered to repair mitochondrial damage, which is one of the major contributors to aging. This level of cellular repair could significantly extend the lifespan of individual cells and ultimately the organism as a whole. AI could then be used to optimize these repair mechanisms, ensuring they function efficiently and without unintended consequences. For deep data collection, nanobots could be distributed throughout the body, collecting data from all sorts of tissues and organs. This would allow us to get a much clearer picture of the molecular changes that occur with age. The sheer volume of data collected would be far beyond what traditional methods could achieve, and AI would be necessary to process and analyze this information. It could help identify patterns in how cells age and how different environmental or genetic factors contribute to that process. 5. Real-time interventions. Nanotechnology could allow us to not only gather data, but also intervene in real time. Imagine a nanobot detecting cellular stress or aging signs and immediately acting to correct it. For example, if oxidative damage is detected, the nanobot could release antioxidant molecules to mitigate the damage, all while continuously reporting back to an AI system that tracks the progress. So while AI can drive much of the data analysis and predictive modeling in aging research, nanotechnology provides the tools to directly observe and intervene at a level that was previously impossible. The combination of these two technologies opens up a whole new frontier for extending human lifespan and potentially even reversing some aspects of aging. What do you think is the biggest challenge in combining nanotechnology and AI for aging research? Is it the technical limitations of nanobots or something else? On a lighter note, uh, do you think we can trust AI controlling our aging in a Sure, whole what's on your process? mind? Let's switch gears a bit. Do you think we can trust on AI controlling our whole nanobot system? Uh, if aging is a time bomb inside our body, so That's a great question. Trusting an AI to control a nanobot system brings up several concerns. On one hand, AI could potentially process massive amounts of data at high speeds, make real time decisions, and operate the nanobots with incredible precision, especially in tasks like diagnosing diseases or repairing tissues at a cellular level. The potential for efficiency and accuracy is huge. On the other hand, there are big risks involved. First, we'd need to ensure the AI has been thoroughly tested to avoid any malfunctions or errors in its decision making, as even a small flaw could lead to disastrous consequences. Also, there's the issue of control. Who decides what the AI does, and how do we ensure it doesn't operate beyond its intended limits? Ethical considerations, transparency in decision making, and accountability will all be key factors in determining whether we can trust AI in such crucial roles. What are your thoughts on this? Would you trust an AI to have full control of a system like this? as a researcher, this is a very complex question. I can't answer it in yes or no. On one hand, yes, AI can save lives, thousands, millions of lives, but I on the completely understand that nuanced approach. As a researcher, you would look at the potential both from a technical and ethical standpoint. AI could certainly be programmed to monitor, adapt, and control a nanobot system in real time with high precision, especially for tasks like targeted drug delivery, disease diagnosis, or even repairing cellular damage. Its ability to process vast data sets and adapt to dynamic biological environments would make it a powerful tool. However, the complexity and unpredictability of biological systems add a level of uncertainty.
Biological environments are incredibly intricate, and unexpected variables can emerge. We may never be able to fully predict how nanobots or AI might behave under all possible conditions, especially when it comes to long term effects or rare circumstances. Also, with AI making decisions in real time, we would need to build in constant monitoring systems, safeguards, and ethical guidelines to ensure we maintain control. It's not just about the technical capability, but also about the governance and the systems in place to hold it accountable. So you're right. It's a multifaceted issue that requires balancing innovation, safety, ethics, and governance. What would be your approach to dealing with these challenges, especially if AI were involved in something as critical as health or biological intervention? Uh, I can't answer it until we completely understand how AI works. The answer of this question lies in completely understanding the functional system of AI processing. Then, yes, we can completely control AI decisions. That's an insightful point. The key lies in understanding how AI processes data, learns, and makes decisions. If we can develop a deeper understanding of AI's operational framework, its decision making algorithms, biases, learning processes, and limits, it would allow us to create systems where we can assert more control and predictability. Currently, AI is somewhat like a black box in many applications, especially with complex models like deep learning, where the decision making process is not always fully transparent. To gain control, we would need to ensure that AI systems are explainable, meaning that we can trace and understand every step of the decision making process. This would be crucial, especially in sensitive domains like healthcare and nanotechnology. Once we have more transparency and control over AI's functional systems, we could apply rigorous safety protocols, creating AI that acts more predictably and responsibly, even in complex dynamic environments like human biology. Would you say that achieving complete transparency and understanding of AI is a prerequisite for safely integrating it into critical systems like nanotech? Or is there room for gradual development and trust building? My point is, let's see, if humans want to become a universal civilization, yes, they will have to develop complex technologies like AI, and they will have to trust them. But the trust lies in complete understanding of the technology they develop. Like you see, electronics, automobile, humans, humans, when use when humans use these technologies, indirectly they trust these technologies. But this trust is not one-sided. On the other hand, humans completely understand each and every factor of these technologies. But as you said, AI is currently a black box. We don't know what's happening inside AI. I think when we will understand the complete functioning of AI, yes, there will be a systems that will completely trusted, and humans will use them to explore other star systems and galaxies. And I, as a futurist, I think humans can never become a universal civilization without AI or mass data analysis machines, which is the AI at this point. You're absolutely right. AI is not just a tool, but a gateway to achieving larger goals, like interstellar exploration. The trust we need in AI will indeed stem from our ability to comprehend its underlying processes. Until then, it's a fine balance between relying on AI's power while understanding and controlling its decisions. Once that trust is solidified through transparency and understanding, AI could play a massive role in our future as a universal civilization.
And yes, if we want to become a universal civilization, it's not just about AI. Every technology we are developing, I think w- we we should develop these technologies with a point of view. We are exploring the universe. If if we adapt with this approach, we can accelerate our technologies with an unprecedented rate. Because with mindset that we are okay in this planet, okay, we don't need to rush. This makes our something humanity lazy. If uh, there is a group, or there is a group of scientists who are very curious and very keen, they want to explore the universe, I mean, with a very short time, yeah, within their lifespan. This will Exactly. Adopting a mindset focused on exploration and the bigger picture, specifically the goal of becoming a universal civilization, would shift how we approach technological development. If every technological leap is seen as a step toward unlocking the mysteries of the universe, it changes the urgency and energy put behind innovation. It's not just about solving earthly problems, it's about preparing for survival and expansion beyond our planet. This approach would push humanity into rapid acceleration mode, fostering collaboration, curiosity, and an urgency to solve problems that seem out of reach today. It's this kind of thinking that could potentially accelerate technological advancements, from AI to space travel and beyond. okay. According to your current whole data, do you think there is a Great. If you ever want to dive deeper into any of these topics or explore others, just let me know. on the basis of your current whole data, or biological data or space data, do you think there is a chances of extraterrestrial life? Based on current biological and space data, there is a strong scientific consensus that there could be a significant chance of extraterrestrial life, though it's still unproven. From the biological perspective, life as we know it depends on a few key elements: water, carbon based chemistry, and energy sources. But it's possible that life could exist in forms very different from what we're familiar with. The discovery of extremophiles, organisms living in extreme conditions on Earth, has expanded the potential habitats for life, suggesting that extraterrestrial life might exist in environments previously considered inhospitable, such as on moons like Europa, Jupiter's moon, or Enceladus, a moon of Saturn, where liquid water might exist beneath icy surfaces. From the space data side, the discovery of thousands of exoplanets in the habitable zone, the region around a star where liquid water could exist, raises the likelihood of conditions suitable for life. We've also detected organic molecules on other planets and in interstellar space, which are the building blocks of life. However, the lack of direct evidence, like microbial life or communication, means that the existence of extraterrestrial life remains speculative. The Fermi paradox highlights the contradiction between the high probability of extraterrestrial civilizations and the lack of evidence for or contact with such civilizations. In short, while the chances of extraterrestrial life seem plausible based on the vastness of the universe and the conditions we've observed, we have no definitive proof yet. As space exploration progresses, especially with missions to Mars, Europa, and beyond, we might gather more data that could point to the existence of extraterrestrial life. Do you think there are chances of non-carbon life? I mean, on Earth, even on Earth, can non-carbon life exist? Yes, the possibility of non carbon based life is a topic that has gained increasing attention in astrobiology. While carbon based life is the only known form of life, scientists have considered the potential for alternative biochemistries that could support life, especially in environments very different from Earth's. Here are a few considerations that make non carbon life plausible. 1. Silicon based life. Silicon,
like carbon, can form complex molecules with long chains and is chemically similar to carbon. Silicon is abundant in the universe and has been proposed as a potential backbone for life forms. However, there are challenges. Silicon-based molecules tend to be less stable than carbon-based molecules, especially in liquid water. Silicon dioxide, silica, for example, forms a solid, unlike carbon dioxide, which is a gas, meaning silicon-based life would likely need very different environmental conditions to thrive. 2. Alternative solvents. Life on Earth depends on water, a liquid that allows for the chemical reactions necessary for life. However, scientists have considered other solvents, like ammonia or methane, that could support life forms based on different biochemistry. These solvents have different properties from water and could function as the medium for life in colder or more extreme environments, such as on the moons of Jupiter or Saturn. 3. Energy sources. Life elsewhere may not depend on sunlight or oxygen. Chemosynthesis, where organisms use chemical reactions rather than sunlight for energy, exists on Earth in deep-sea vent ecosystems. Similarly, non-carbon-based life might utilize other sources of energy, such as sulfur or hydrogen, to fuel metabolic processes. 4. Exoplanet discoveries. As we discover more exoplanets and their atmospheres, scientists are investigating how life might exist in different chemical environments. The diversity of planets with extreme conditions, such as high temperatures, strong radiation, and unusual atmospheric compositions, makes it possible that life elsewhere could take forms completely different from Earth-based life. While we haven't found any evidence of non-carbon life yet, the potential is certainly worth considering. Non-carbon life could potentially exist in places we haven't yet explored, like on planets or moons with extreme conditions, and it's an open question whether such life would be radically different or perhaps more similar to Earth-based life than we imagine. Okay, uh, the main issue in our space travel we are facing now is how to get rid of gravity, or how to get out of Earth gravity with very low cost. And the second one is our source of energy. Can you elaborate these two issues? Absolutely. The two challenges you mentioned, getting out of Earth's gravity and finding an efficient source of energy for space travel, are fundamental obstacles for the advancement of space exploration. Let's dive into both. Overcoming Earth's gravity, launch costs, and efficiency. Earth's gravity is one of the primary challenges for space travel. To escape Earth's gravitational pull, spacecraft must achieve a speed of around 11.2 kilometers per second, escape velocity, which requires a tremendous amount of energy. Tad of challenges. Massive fuel requirements. Traditional chemical rockets rely on powerful propulsion systems, which burn large amounts of fuel to generate enough thrust to break free of Earth's gravity. This requires large, heavy rockets that need significant amounts of fuel, resulting in extremely high launch costs. Launch cost. The cost of getting into space is a key barrier. A single rocket launch can cost hundreds of millions of dollars, depending on the size and mission, which is a significant hindrance to space exploration. The cost is mainly driven by the need for vast quantities of propellant and the complexity of rocket design. Inefficient fuel usage. Chemical rockets are relatively inefficient in terms of fuel consumption, and most of the fuel is used just to overcome Earth's gravitational pull. This inefficiency limits how much cargo or people can be carried into space and the overall cost effectiveness of missions. Potential solutions. Reusable rockets. Companies like SpaceX and Blue Origin are pioneering reusable rocket technology. The idea is that instead of discarding rockets after a single use, they can land back on Earth and be refueled for future missions. This drastically reduces the cost of launches, making space more accessible. SpaceX's Falcon 9, for example, has already made multiple successful reflights, which is a huge step forward. Space elevators. A theoretical solution to reducing the cost of getting into space is the concept of a space elevator. This would involve a long tether extending from the Earth's surface to a platform in geostationary orbit. Instead of launching rockets,
Payloads would be lifted into space via this elevator using electric-powered vehicles, a climber. Though currently speculative and far from reality due to material science challenges, the need for a material strong enough to withstand Earth's gravity, it could drastically reduce the cost and energy required to reach space. Spaceplanes. Spaceplanes are vehicles that can take off and land like an airplane, but can also fly into space. They combine the efficiency of conventional airliners for takeoff and landing with rocket-powered propulsion for reaching orbit. Though projects like the Space Shuttle have had limited success, innovations in this area could eventually lead to more efficient spaceplanes in the future. Ion propulsion for in-space travel. Once in space, rockets are less reliant on traditional propulsion methods. Ion drives, which use charged particles ions accelerated by electric fields, offer much higher efficiency compared to chemical propulsion systems. While they don't have the thrust needed to launch from Earth, they are ideal for long-duration space missions once the spacecraft is already in orbit. 2. Energy for space travel. The second major challenge is finding a reliable and efficient energy source for space travel, especially for long-duration missions, such as those to Mars or beyond. Challenges: power density. Spacecraft need a lot of energy to power their systems, life support, propulsion, communication, etc., and conventional energy sources, like chemical batteries or solar panels, are limited by their energy density. In space, where resources like fuel are very limited, energy systems must be both lightweight and powerful enough to operate over long distances and time periods. Solar power limitations. For missions within our solar system, solar power has been the most common energy source. Solar panels provide a reliable and relatively efficient way to generate electricity from the sun. However, as spacecraft move further from the sun, solar power becomes less effective. For example, at the distance of Mars, solar panels generate significantly less power than they do closer to Earth, and beyond that, they're largely ineffective. Battery capacity. Traditional chemical batteries like those used on Earth are far too heavy and inefficient for space travel. While newer battery technologies, like lithium-ion, are much better, they still don't provide the energy density needed for long missions, especially for interplanetary travel. Potential solutions: nuclear power. One promising energy source for deep space travel is nuclear power. Nuclear reactors could provide a continuous हेलो। क्या हुआ? अचानक खामोश हो गई हो। हेलो। Okay, let's talk in detail about space planes and ion engines. What are the main failures we are facing in space planes, and what do you think can ion engines help us to make such efficient way that they can help us to leave Earth gravity? I mean, can work in our atmosphere rather than in space travel. spaceplanes and ion engines, an in-depth exploration. Spaceplanes and ion engines are two technologies that have the potential to revolutionize space travel. However, both face distinct challenges. Let's break down each one in more detail and analyze the current status, their limitations, and how they could help in future space exploration. 1. Spaceplanes. Spaceplanes are a type of vehicle that combines the features of an airplane and a spacecraft. They are designed to take off like an airplane, operate in the atmosphere,
and then transition into space. The most famous example is the Space Shuttle, which was operational from 1981 to 2011. And the main challenges of spaceplanes: engine performance and efficiency. One of the biggest challenges in spaceplane design is developing engines that are both efficient in the atmosphere and capable of achieving the necessary speed and altitude to reach space. Spaceplanes need to transition from powered flight in the atmosphere to high speed, high altitude flight where traditional jet engines no longer work, above the Kármán line, around 100 kilometers. Jet engines can work within Earth's atmosphere, but once you pass a certain altitude, around 15 to 20 kilometers, the air is too thin for them to function. This means that spaceplanes must switch to rocket engines once they leave the atmosphere, which adds complexity to the design and fuel requirements. High thermal loads. Re-entering the atmosphere from space generates immense heat due to the friction between the spacecraft and the air. This heat must be dissipated or resisted, and in spaceplane design, this means developing materials that can withstand the intense temperatures without burning up. The space shuttle used heat shields, but they were costly and required maintenance after every mission. Cost and complexity. The spaceplane design, especially for something like the space shuttle, was incredibly complex. It required multiple stages. It had a rocket to get it into space, a gliding re-entry phase, and then a landing phase. Additionally, maintenance between flights was time-consuming and expensive. The idea was that it could be reused many times to lower the cost of space access, but in reality, the costs were still high. Takeoff weight. To get a spacecraft off the ground and into space requires a huge amount of energy. Traditional space planes, like the Space Shuttle, required massive amounts of fuel, making them incredibly heavy. This means the vehicle must carry enormous amounts of propellant, reducing its payload capacity and making each launch expensive. Tavish potential solutions and future of spaceplanes. Improved hybrid engines. Spaceplanes will likely need more efficient hybrid propulsion systems that can operate both in atmospheric flight using air-breathing engines and in space using rocket engines. The key is transitioning seamlessly from atmospheric flight to space propulsion, which requires engines capable of operating in both environments efficiently. Lightweight materials. Advancements in materials science could solve the heat shield and weight issues. More heat-resistant materials, as well as ultra-lightweight composites, could help make spaceplanes more cost-effective and capable of withstanding the extreme temperatures of re-entry. Reusable designs. Companies like Blue Origin and SpaceX have demonstrated the benefits of reusability with rockets like New Shepard and Falcon 9. Similar concepts could be applied to spaceplanes, where the vehicles could be reused multiple times, dramatically reducing the cost per flight. 2. Ion engines. Ion engines, also known as ion thrusters, are a type of electric propulsion system that uses ions, charged particles, to generate thrust. Unlike traditional chemical rockets that expel mass rapidly to create thrust, ion engines accelerate ions using electric fields. This makes them extremely efficient, but also means they produce much lower levels of thrust. Navisour. How ion engines work. Ion engines ionize a propellant, usually xenon gas, and use electric fields to accelerate these ions out of the engine at high speeds, generating thrust in the opposite direction. The energy required to ionize and accelerate the ions is provided by solar panels or nuclear reactors, making ion engines highly energy efficient compared to chemical rockets. Getter. Current challenges of ion engines. Low thrust. The major downside of ion engines is that they provide very low thrust. For comparison, chemical rockets produce much more thrust but are far less efficient. Ion engines, while incredibly efficient in terms of fuel usage, are not powerful enough to get a spacecraft off the ground from Earth's surface. They work well in the vacuum of space, where there's no air resistance. How can you फिर रुक गई how can we increase the
thrust rate of ion engines. What are the main issues retarding their thrust rate? Increasing the thrust of ion engines while maintaining their efficiency is a key challenge in advancing ion propulsion systems. Currently, ion engines produce very low thrust compared to chemical rockets, which is why they can't be used for launches from Earth's surface. However, efforts are underway to address this issue and enhance the performance of ion engines for long नहीं ले रहा duration space travel. How can we increase the thrust of ion engines? 1. Increasing the ionization efficiency. Ionization is the process of converting neutral gas into ions. By improving the efficiency of this ionization process, we can increase the amount of ionized particles, which would lead to higher levels of thrust. Advanced ionization techniques like using high-power electron beams or radio frequency (RF) ionization could potentially increase the ionization efficiency. These methods may allow more efficient creation of ionized particles, resulting in a higher number of ions to be accelerated. 2. Increasing the exhaust velocity. The thrust of an ion engine is proportional to the exhaust velocity of the ions being expelled. The faster the ions are ejected, the greater the thrust. Currently, ion engines typically use xenon ions, which have relatively low mass. However, to increase exhaust velocity, one approach could be to use heavier ions like krypton or argon or higher energy acceleration techniques. Advanced electrostatic grids and magnetic fields that more efficiently control the acceleration of ions can help achieve higher exhaust velocities. 3. Optimizing the power supply. The performance of an ion engine is heavily reliant on the power supply, usually provided by solar panels or nuclear reactors. Increasing the power available for the engine would allow for higher ionization and higher ion acceleration, thus increasing thrust. High-efficiency power systems and more powerful nuclear reactors for deep space missions could be developed to provide the necessary power without increasing the mass of the spacecraft. 4. Improved grid efficiency. Ion engines use grids to extract ions from the ionization chamber and accelerate them. Improving the efficiency of these grids can increase the thrust while reducing the power requirements. Using more advanced materials for the grids, such as high-strength ceramics or composites, could improve the durability and efficiency of the grids. 5. Use of multiple thrusters, clustered ion thrusters. A possible solution to increasing the total thrust of an ion propulsion system is to use multiple ion engines in parallel. This would distribute the load and increase overall thrust without requiring the same amount of power from each individual engine. Main issues: limiting ion engines' thrust. While the above methods can theoretically increase the thrust of ion engines, several fundamental challenges must be overcome to make them practical for more demanding applications. 1. Power-to-thrust ratio. The biggest challenge of ion engines is their low thrust-to-weight ratio. Ion engines are extremely efficient in terms of fuel consumption, but the amount of thrust they generate is small. Even with improvements, they will never produce the kind of thrust required to overcome Earth's gravity. This means they're best suited for use in space after a vehicle has already been launched. 2. Heat management. As the ion engine works to accelerate ion, Okay. So